जी हाँ स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल्स। कॉन्स कैसे बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के रोटेशन से। बट उसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक प्लेन में सर्कल कैसे बनता है। मान लो एक प्लेन पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया एक फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब है ये पॉइंट इस प्लेन का ना बाहर आ सकता है, ना अंदर जा सकता है, ना ही इसी प्लेन में मूव कर सकता है। दिस पॉइंट इज टू बी फिक्स्ड ऑन ए पर्टिकुलर प्लेन। और एक दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया बेटा, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया मूविंग पॉइंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच में एक दूरी फिक्स्ड करते हैं, लेट दिस डिस्टेंस बी आर डिस्टेंस। उसके बाद हमने इस फिक्स मूविंग पॉइंट को आज़ादी दिया बेटा, मतलब घूमो इस बोर्ड पे या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेन पे उसको घूमने का आज़ादी दे दो। उस सिचुएशन पे ये जो भी पाथ को ट्रैक कर लेगा, इस पाथ को ही बोला जाएगा सर्कल। रिमेंबर दिस पॉइंट। सर्कल बनाने का जो प्राइमरी कंडीशन है कि वन ऑफ द पॉइंट हैज टू बी फिक्स्ड ऑन ए प्लेन एंड अदर पॉइंट हैज टू बी मूविंग पॉइंट। The moving point moves about the fixed point in such a manner that its distance from this fixed point is always fixed. Under that particular geometric condition, whatever path is traced by the moving point, that path is called the circle. तो हमेशा एक बोर्ड पे या हमेशा एक प्लेन पे सर्कल ही बनेगा अगर इस पॉइंट को इस प्लेन के बाहर जाने का आज़ादी आप नहीं दोगे। प्लेन से बाहर आ जाएगा तो वो स्पीयर बनेगा, दैट इज ए डिफरेंट सिचुएशन। बट हमने कंडीशन ये रखा, दूरी भी फिक्स करना है और बोर्ड पे ही घूमना है या फिर एक पर्टिकुलर प्लेन पे ही घूमना है, तो उस सिचुएशन पे ये सर्कुलर पाथ पे ही घूमेगा। ओके बेटा, ये समझने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से कोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एक डिग्री हमने रखा 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली दिस साइड इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग जो कोन का फॉर्मेशन करेंगे, हमने एक एक साइड के अबाउट दूसरे साइड को घुमाना है। रिमेंबर, पहले मैं हाइपोटेन्यूज के अबाउट नहीं घुमाऊंगा, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के ये साइड और ये साइड के अबाउट घुमाऊंगा और कोन बनाऊंगा। तब जो कोन बनने वाले दे आर गोइंग टू बी सिंगल कोन्स ओनली। देखिए कैसे, मान लो मैंने इस साइड को फिक्स कर दिया और बोला इस साइड को घुमाओ अबाउट दिस साइड। इसका मतलब मैं कंडीशन क्या रख रहा हूँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि दिस साइड इज गोइंग टू बी द फिक्स्ड साइड and this side is going to move. This side is going to move, but as this side is fixed, every point on this side has to be fixed. तो क्या मान सकते हो इस साइड के ऊपर ये वाला पॉइंट है जो ये भी फिक्स्ड होना चाहिए। रिमेंबर, इस साइड को मूव कराने का मतलब ये है, इसमें से एक पॉइंट जो इस साइड के ऊपर लाई करेगा वो तो फिक्स्ड होना जरूरी है, बाकी इस साइड के अबाउट जितने भी पॉइंट्स है ना, इस साइड के अबाउट घूमेंगे। तो अगर मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले से डिसाइड किया ABC, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं कुछ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे इस साइड को इस साइड के अबाउट घुमाना है। दिस बिकम्स माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस साइड को मुझे घुमाना है, ऑब्वियसली ये बोर्ड के बाहर आएगा, तो इसी प्लेन पे इस साइड को मैं घुमा रहा हूँ। पर इतना कन्फ्यूजन आपको लेना नहीं है, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया फिक्स्ड पॉइंट। सर इस पॉइंट को अपने फिक्स क्यों नाम दिया, क्योंकि ये फिक्स्ड साइड के ऊपर है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एवरी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन हैज टू बी फिक्स्ड। बट इसी पॉइंट को छोड़ के इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है सारे मूवेबल पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये लाइन पूरा का पूरा सर्कल के बस प्लेन के बाहर आ रहा है। या दिस इज गोइंग टू बी ए मूविंग पॉइंट, यस सर। एंड अंडर एनी सिचुएशन this distance is never going to be changed. Why? This is the side of a right angle triangle. This is already fixed. Remember this situation, if the moving point moves about a fixed point under the given geometrical condition that its distance from the fixed point is always fixed, then it will always move in a circular path. That means this point C has to move on a circular path like this. If this moves on a circular path, it appears as if a cone is formed. Okay beta, and this type of cone is called a right circular cone. Why is it called a right circular cone? Because the height and radius, this is going to be the radius of the circular track,
क्योंकि जो फिक्स्ड दूरी होता है ना उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये जो कोण बनेगा उस कोण में से बी और सी का जो साइड है, बी सी जो साइड है जिसको आप घुमा रहे हो बेटा, उसी साइड का लेंथ क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। और जो फिक्स्ड साइड है ना, दैट इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल and also going to be the height of the right circular cone. So this is going to be the height of the cone. This is going to be the radius of the cone, and this is, as you know, that called the slant height of the cone. Did you understand how single cones are formed? Same is the situation if I tend to move this side about this particular side. Again, we are going to get a single cone. Let us draw it again. Suppose I'm put in a situation, I'm asked by somebody to move AB about the side BC. Let us draw it again. Right now I'm given a situation that I'm asked to rotate this AB about this BC. That means this is going to be the fixed side. This is going to be the moving side. I fix a point B here, remembering the situation that this lies on the axis of rotation. If it lies on the axis of rotation, this point has to be fixed. I don't need to bother about all the points lying on the line because the extreme end points matters the most. The distance between these 2 points is fixed, and this is the moving point and this is the fixed point. Remember, this is going to move in this plane only, like this. Suppose this is the board, this is one plane. I am creating one more plane here. In this plane, this side is going to rotate about this particular axis of rotation. If it rotates like this, it becomes a 3-dimensional figure. It's hard to draw on the board. But giving it a 3D view, it will appear to rotate in a circle. Why will it move in a circle? Because it satisfies the given geometrical condition that when a moving point moves about a fixed point at a fixed distance on a particular plane, it is going to move in a circular path. So in this way, it appears as if a cone is formed, and that particular cone is called a right circular cone. Why is it called a right circular cone? Because the height is going to be perpendicular to the radius. Remember, the fixed side is always going to be the height. So the side that was used as the axis of rotation becomes the height of the right circular cone. The moving side will become the radius of the right circular cone, and obviously the hypotenuse will remain the slant height in both the situation. Getting my point? So what becomes the slant height? The original hypotenuse will always remain as the slant height. The reason being, height and radius are perpendicular to each other. In a right angle triangle, whatever sides were perpendicular to each other, they will ultimately become the height and radius, but the slant height will remain as the hypotenuse. Okay, sorry, hypotenuse will remain as the slant height. Okay, but under this situation, if you are given the data of height and radius, obviously we can find the volume of the cone. We can find the curved surface area or total surface area related to the cone once we are aware of the situation. Okay, but today's topic of discussion is how double cones are formed. If you are fully aware of the formation of single cone, then there is no point of thinking of the double cones. It will be extremely easy. Let us draw and let us understand the situations how double cones are formed with the rotation of triangle. सबसे पहले जो क्राइटेरिया है ना बेटा, जिस क्राइटेरिया पे डबल कोन बनता है, रिमेंबर दिस, पहले सिंगल कोन जब बनता था ना, इसमें H और R के बीच में कितना डिग्री हुआ करता था बेटा, 90 डिग्री. दिस इज द प्री रिक्विजाइट, क्योंकि बेटा हम लोग कौन सा कोन पढ़ते हैं, राइट सर्कुलर कोन. अगर कोई कोन में हाइट एंड रेडियस के बीच में 90 डिग्री नहीं होगा तब तो कोन फॉर्मेशन का सवाल ही नहीं है. ओके, सो दिस गिव्स अस अ क्लू हाउ टू ड्रॉ डबल कोन. सपोज बोला बेटा इस हाइपोटेनस के अबाउट में घुमाऊंगा, इस ट्रायंगल को, पूरे ट्रायंगल को घुमा रहा हूं अबाउट दिस हाइपोटेनस. नाउ दिस साइड इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दैट मीन्स every point lying on this side has to be fixed. Whatever point lies on the line or whatever point lies on the hypotenuse has to be fixed because this is going to be the axis of rotation. What I am doing, I am rotating the entire triangle in this fashion. लेकिन हमें तो फॉर्मेशन करना है क्या है, राइट सर्कुलर कोन. उसके लिए हाइट और रेडियस के बीच में परपेंडिकुलर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई परपेंडिकुलर दिख ही नहीं रही. तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, ड्रॉ करने का जो तरीका है, मैं इस पॉइंट से क्या करूं, जानबूझ के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. लेट दिस पॉइंट बी O.
कम अगेन, ये पॉइंट से जहां पे राइट एंगल था उस वर्टेक्स से मैं जानबूझ के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. फॉरगेट अबाउट दिस राइट नाउ. इतने पार्ट को अगर मैं हाइड कर लूं, क्या आपको वही सिचुएशन नजर आ रहा है बेटा? दिस इज द फिक्स्ड साइड एंड दिस इज द मूविंग साइड. लेट अस हाइड दिस. व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ? If I am hiding this, this will move on the circle. Why? This point is a moving point. Let us write it down. This point is the moving point and this point is the fixed point. And this distance is always going to be fixed since the perpendicular distance of a point on a line is always fixed. Because we can draw only one perpendicular from a point on any given line. So this distance is the shortest possible distance and this is called the perpendicular distance. This is never going to change in our geometry. Is it clear? So this distance is a fixed distance. Now comes the concept of circle again. Here is a moving point, here is a fixed point and you can choose any plane. If it is allowed to move, it will form a circle like this. It will appear to move on a circle like this. But remember that the same thing is happening with the triangle below. I am drawing the triangle. This triangle is BOC. Let us draw it again. This triangle is BOC. This is 90 degree, remember. This triangle is BOC. Under this situation, I am moving the point BU around O. That means the common circle is going to be formed both for the upward triangle, also for the downward triangle. I mean to say that ABO will always form a triangle and BOC is also going to form a triangle. But these two triangles are going to form the respective cones in such a manner that BO is going to be the radius of the common circle. That means we are going to get two inverted cones like this. We are going to get two inverted cones like this. I am drawing it with a green sketch so that you can easily visualize. And this is the formation of cone by the upper triangle. So we are going to get two inverted cones using the right angle triangle when it is made to rotate around the hypotenuse. Is it clear? But इसके ऊपर जब सवाल आता है बेटा, उसको कैसे हैंडल करेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. रिमेंबर दिस, जैसे यहाँ पे कौन बना वैसे यहाँ पे कौन बनेगा और इस सर्कल फिक्स्ड हो गया क्योंकि सेंटर फिक्स्ड है, मूविंग पॉइंट सेम दूरी पे है. सेंटर फिक्स्ड, रेडियस फिक्स, तो सर्कल भी फिक्स है क्योंकि एक ही पॉइंट को सेंटर लिया आपने, एक ही दूरी को रेडियस लिया. इसका मतलब ये जिस सर्कल पे घूमेगा ये वाला ट्रायंगल भी उसी सर्कल पे ही घूमेगा. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट टू इन्वर्टेड कोन्स. इज इट क्लियर? अगर ये फंडा क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं. इसके ऊपर सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, इसमें से हाइट और रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज़ को हम देखेंगे. ठीक है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं. और सिंगल कॉन्स के ऊपर तो आप 9th क्लास में भी और लोअर क्लास में भी क्वेश्चन किए होंगे. तो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस हाउ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सॉल्व फॉर डबल कॉन फॉर्मेशन. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, suppose the two sides are given as 15 and 20 centimeter. I have given the values randomly. This side is given as 15 and this side is given as 20. And I am saying that you are moving this right angle triangle in such a manner that AC becomes the point of rotation. That means about that hypotenuse you are going to rotate the triangle. About AC, the triangle is rotated. Suppose this is the situation, we already know that it is going to form two inverted cones. Let us understand this. I am drawing a perpendicular like this, BP. This becomes the fixed moving point, this becomes the fixed point because any point on this AC is going to be fixed. Remember the situation being it is going to rotate around the side AC. That means XC becomes the axis of rotation. Under that situation, it is going to form a circle like this. This has to be the common circle, and one of the circle is formed by the lower triangle and one of the circle is formed by the upper triangle. That means there are two cones, they are formed by the respective triangles since circles are formed. As the bases are circular, it is going to be a right circular cone. Clear? Under this situation, I have to find this radius of the common circle
and the heights of the respective cones. Let this height be h1 and this height be h2. Remember one thing, that whatever the sum of h1 plus h2 we are going to get is going to be the exact length of the hypotenuse, since these 3 points are collinear. This point, and these points, all the 3 points are going to be collinear because this side is fixed. So these points are collinear. That means h1 plus h2 gives you the value of AC. Let us write it down. First condition, we are going to get the sum of the respective height is exactly equal to the hypotenuse. But that doesn't guarantee that we can easily find these heights. Okay. But what is the value of this radius? The radius is the radius of this circular cone. This is the perpendicular distance of the point from the original right angle on the hypotenuse. This perpendicular distance is going to be the radius. If this is the perpendicular distance, remember this, ये कितना डिग्री पे बनेगा बेटा? ये 90 डिग्री पे ही बनेगा. ये बात हमें पहले से पता है, तो हम बहुत इजी मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. तो इन सारे डाटा को फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम ट्रायंगल को रीड्रॉ करते हैं. इन ट्रायंगल्स को अलग अलग सोचते हैं सो दैट यहाँ पे आर और इसका वैल्यू को इजीली फाइंड कर सके. ओके. थिंक ऑफ इट. मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन ये लिया, ये तो 20 है और ये 15 है. तो मुझे एक चीज़ ऑलरेडी पता है, AC का वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. देयर आर सिमिलरिटी ऑल्सो, यू कैन यूज सिमिलरिटी टू फाइंड, बट आई एम टेलिंग यू इन अ बेटर वे. AC can be found out by the formula AB का square plus BC का square, and if you do the under root, you are going to get the value of AC. We know that this is 15 का square plus 20 का square. This is going to be 625 का root over, and it gives the value of 25. Okay. Remembering the Pythagorean triplets are also going to help you, since we know that 15, 20 and 25 are the Pythagorean triplets. So it is going to save your time. So we understood that if I redraw the triangle like this side is given as 20, this side is given as 15, and this side comes out to be 25. Is there any way to find out this radius? This radius is perpendicular. Remember this. Since this is perpendicular, this is going to be the height for this triangle using this base. Under that situation, we already learnt the methods actually. You may not remember this. I am going to find the area of the triangle by two different methods. One is obviously this is a right angle triangle. If I write the area of this triangle like this, one method is half product of the side containing right angle. Do you remember that? In a right angle triangle, the product of these two sides divided by 2. That means half base into height. You can consider any side as the base or any side as the height. Product of the sides containing right angle divided by 2, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हाफ टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल. जो दो साइड राइट एंगल को कंटेन करेंगे उनका प्रोडक्ट्स को अगर 2 से डिवाइड करोगे, आधा लोगे, तो आपको एरिया मिलेगा. बताओ बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हो? हाफ इंटू 20 इंटू 15. इज इट क्लियर? मेरा मोटो क्या है बेटा? इस आर को फाइंड करना. इसी ट्रायंगल का इस बेस के रेस्पेक्ट में तो ये हाइट बन रहे, तो मैंने इसको जानबूझ के इक्वल किया, इक्वल टू हाफ इंटू बेस. आई हैव टेकन द बेस एज 25 and the height is r, which is exactly the radius of the two inverted cones. Solving this, half cancels on both sides. So 20 into 15 by 25 is going to be the value of the radius. 4 here, 5 here, 3 here. That means the value of r comes out to be 12 centimeter. Isn't that easy? So I don't need to bother about the concept of similarity or trigonometry to find the value of r. Again एक बात है बेटा, यहाँ पे बच्चे जो उलझ जाएंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कभी कभार कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से काम निकालना क्योंकि डेसिमल कैलकुलेशन में थोड़ा टीडियस हो जाएगा. तो अंडर दैट सिचुएशन जस्ट कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स. वन by the traditional method or by using any ready-made formula, and the other one is half base into height. This concept is always useful here because the reason being this is always going to be perpendicular to the given side. Okay, so I can take it as the height and as this side as the base. Okay, so आपने तो रेडियस को फाइंड कर लिया, इन दोनों हाइट्स को कैसे फाइंड करें? उनके लिए भी हम ट्रायंगल्स को यूज कर लेते हैं. ओके बेटा, लेट अस रब इट.
मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल्स को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो बेटा, इस हाइट को अगर मैं फाइंड कर लिया तो इस हाइट को फाइंड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे टोटल का सम पता है 25 और इन दोनों का सम ही 25 के बराबर है। तो मुझे किसी एक हाइट को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने ये वाला ट्रायंगल को यूज कर लिया। कौन सा ट्रायंगल? क्या दिस इज गोइंग टू बी ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल? Since this is the slant head on both sides, I can use the smaller triangle as well. If this is 15, this is also going to be 15. Let us use the smaller triangle. Okay, I'm using the upper triangle since these are actually on the upper sides, so better use the upper triangle so that you can visualize it. This is an isosceles triangle, 20 20. Remember this is the radius, means this is also going to be the radius. We've already found the value of the radius. How much is it? 12. So 12 plus 12 is going to be 24. Okay. Now I am finding this height. Is it perpendicular to this radius? Yes, sir. Since this is a cone and this is a right circular cone, height is always perpendicular to the radius. That means this height is going to be perpendicular to this. Remember that using Heron's formula, we can easily find the area of an isosceles triangle. It is very easy, since finding square root becomes easy in case of isosceles triangle. So I am finding the area of the triangle by two different methods again. One by the Heron's formula and one by the traditional formula, half base into height. Since we are using the area of the same triangle, this value is not going to be changed for LHS and RHS, and equating these two, we get the value of the variable. Is it clear? So let us equate. First of all, find the area of the triangle by Heron's formula. For that, I need to calculate the semi-perimeter of the triangle. 20, 20 plus 24. This 3 gives us 64 by 2. Is going to be 32. 20 plus 20 is 40 plus 20 is 60 plus 4 64. 64 by 2 is 32. This is the semi-perimeter. Do you remember that you can find the area of the triangle using this method by using the Heron's formula, like this. Let us replace s by 32 and subtract each of the remaining side. 32 minus 20 is 12, 32 minus 20 is 12, and 32 minus 24 is 8, and under root. This gives us the value of 12. Remember that 8 4 is 32 होता है बेटा, दो 8 के लिए हमने एक 8 को बाहर लिया, 4 का रूट पर 2 होता है. What is the value? Don't need to calculate the value, since we have to equate the LHS to RHS. This is 96 to the 192, but I write it like this: 12 into 8 into 2. Okay, this is going to be equal to half into base is 24, and you have to find out this height h. Since 24 cancels on both sides, so h1 is going to be 2 8 16. h1 is going to be 2 8 16. If this side comes out to be 16 centimeter, then the remaining one, that is h1 plus h2, has to be equal to 25. That means h2 is going to be equal to 9. In this way, we have solved all the variables of the given questions. That is the radius and the heights of the